We will solve question based on duality property. So according to property, if x of t has Fourier transform x of omega, then capital X of t, this x we will write here over here, this thing we will write over here, and it has Fourier transform 2 pi times x of minus omega. In terms of f, if x of t has Fourier transform capital X of f, then capital X of t has Fourier transform small x of minus f. So this is the duality property. Based on this, we will solve the questions. So question number 1, if e raised to minus t u of t has Fourier transform 1 upon 1 plus j 2 pi f, then 1 upon 1 plus j 2 pi t has Fourier transform. 1 upon 1 plus j 2 pi t has Fourier transform. Options: e raised to f u of f, e raised to f, e raised to minus f u of f, e raised to f u of minus f, e raised to minus f u of minus f. So you need to apply the duality property. I will write again duality property. X of t Fourier transform capital X of f. I will be using f because options are in f form. Then capital X of t has Fourier transform small x of minus f. This we have written over here, and f is replaced with t. F is replaced with t. Now this we will write over here, and t will be replaced by minus f. Just see the property. F is written over here and t is written over here, but when we are writing it, t is replaced with minus f. So correct answer is option C. Now see here, this thing is written over here. So 1 upon 1 plus j 2 pi, f is replaced with t. Now we will write this thing over here. While writing, small t will be replaced with minus f. Small t will be replaced with minus f. So this becomes e raised to power minus f u of minus f. So it becomes e raised to f u of minus f. The correct answer is option C. Next question. Fourier transform of 2a upon a square plus t square is, and there are 4 options. Fourier transform of 2a upon a square plus t square is. For this you should know that e raised to minus a mod of t has Fourier transform 2a upon a square plus omega square. So this is written over here, and change is that omega is replaced with t. Now we will write this thing over here, and it will be multiplied with a factor of 2 pi. Whenever we are using duality property for omega, we have a factor 2 pi x of minus omega. X of minus omega. So this becomes, t will be replaced with minus omega. So 2 pi e raised to power minus a mod of minus omega. Mod of minus omega is omega. So our answer is 2 pi e raised to power minus a mod of omega. So correct answer is option F. So फिर से देखो डुअलिटी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है. ये स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है, ई रेस टू माइनस ए मॉड टी 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आया था,
उसको टाइम में लिखना है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 2 पाई टाइम्स एक्स ऑफ माइनस ओमेगा एंड दिस विल बी योर स्मॉल एक्स ऑफ ओमेगा. T will be replaced with minus omega. T is replaced with minus omega. So e raised to 2 pi is a factor. E raised to power minus a. T will be replaced with minus omega. So answer is option F. So if a rect of t by t has Fourier transform at sinc ft, then at sinc capital T small t has Fourier transform. So again, it is based on duality property. So this we have written over here. This we have written over here, and t is replaced with f is replaced with small t. F is replaced with small t. Then this we will write over here, and small t will be replaced with minus f. Small t will be replaced with minus f. So its Fourier transform is a rect of minus f upon capital T. But as rectangular sinc both are even function, so it is nothing but a rect of f by capital T, because rectangular function is even function. Rectangular function is even function. So based on this, we should remember this formula that at sinc small t capital T has Fourier transform a rect of f upon capital T. At sinc small t capital T has Fourier transform a rect of small f upon capital T. So what will be Fourier transform of sinc t? Just apply this formula here. Apply this formula here. So if I compare, at value is 1, capital T value is also 1. If I compare, यहाँ पे at लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी है, मतलब कैपिटल टी की वैल्यू 1 है और at की वैल्यू 1 है. That means as small t is 1, at is 1, so a value is also 1. Small t की capital T की is 1, so substitute here, so it becomes capital A into 1 equal to 1, so capital A value is also 1. Then use this thing. So what is your answer? A, B, C. A value is 1, rect of small f upon capital T value is also 1, so answer is rect of f. The correct answer is option C. Fourier transform of sinc 2t. Fourier transform of sinc 2t is, for your convenience I will write the formula that capital AT sinc small t capital T has Fourier transform a rect of small f upon capital T. So just compare. So if I compare Tt equal to 2t, Tt cancel, capital T value is 2. If I compare At equal to 1, capital T is 2, so A equal to 1 by 2. A equal to 1 by 2. Answer is A rect of f upon capital T. A value is 1 by 2. A value is 1 by 2. Rect of small f upon capital T. Capital T value is 2. So correct answer is option A. Now one correction. So we know that cos alpha t has Fourier transform pi times delta omega minus alpha plus delta omega plus alpha.
Then in the previous lecture, I have given this formula that cos alpha t has Fourier transform 1 by 2 delta f minus alpha plus delta f plus alpha. So this is little incorrect. Little change is there. So this formula is valid if I have cos 2 pi alpha t. Cos 2 pi alpha t. This formula is valid if I have cos 2 pi alpha t. जैसे कि अगर यही सेम फॉर्मूला मैं cos ओमेगा 0 t के लिए लिख रहा, तो इट विल बी पाई टाइम्स डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट. Then what is the frequency? I should find out what is the frequency of this 2 pi by omega naught, or you can say that this is nothing but cos 2 pi f naught t. So it has Fourier transform 1 by 2 times delta f minus f naught plus delta f plus f naught. तो यहाँ पे जब आप f के टर्म में अगर आप आंसर लिख रहे कॉस फंक्शन का, तो यहाँ पे 2 पाई का फैक्टर जरूरी है. द 2 पाई फैक्टर मस्ट बी देयर. While giving you in the previous lecture, I have given cos alpha t, which is incorrect. It should be cos 2 pi alpha t. ठीक है. Similarly, sin alpha t has Fourier transform, or sin omega 0 t. Okay, sin alpha t has Fourier transform pi by j delta omega minus alpha minus delta omega plus alpha. Then sin omega naught t will have Fourier transform pi by j delta omega minus omega naught minus delta omega plus omega naught. Then sin f omega naught t will not have Fourier transform pi by j delta f minus omega naught. तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए sin 2 pi f naught t has Fourier transform pi by j delta f minus f naught minus delta f plus f naught. So when you are writing formula in terms of f, the 2 pi factor must be there. The 2 pi factor must be there. So question, Fourier transform of cos 100 pi t is. Fourier transform of cos 100 pi t is. So you should find out the frequency. What is the frequency here? So 100 pi t equal to 2 pi f t or 2 pi f naught t. Pi pi cancel, t cancel, f naught equal to 50. So the signal will be shifted by 50 hertz. The spectrum will be shifted by 50 hertz. So due to this, correct answer is option D. With cos between two impulses we have plus sign. So spectrum will be shifted by 50 hertz. Spectrum will be shifted by 50 hertz. So correct answer is option D. It will not be shifted by 100 pi. It will not shifted by 100 pi. When you are expressing your answer in terms of f, it will not shift by 100 pi. It will shift by the frequency. So frequency is 50. So it will shift by 50 hertz only. Fourier transform of sin 3 sin 200 pi t is. So what is the frequency here? 100. Frequency is 100 hertz. So spectrum will be shifted by 100 hertz. Spectrum will be shifted by 100 hertz. With sine function between two impulses, we have negative sign. Between two impulses we have negative sign. With cos between two impulses we have positive sign. And again j will also come. So correct answer is option A. Now one more correction from the previous lecture.
e raised to power j alpha t x of t has Fourier transform x of omega minus अल्फा, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको देते टाइम ये बताया e रेस टू पावर j अल्फा t x of t हैज फोरियर ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ f x of f माइनस अल्फा, ये इनकरेक्ट है। सो अगेन करेक्ट फॉर्मूला इज e रेस टू पावर j 2 pi alpha t x of t has Fourier transform x of f minus alpha. So this is the correction. E raised to power, when you are expressing in terms of shift, here we have a factor of 2 pi. अगर वो 2 pi alpha से exponential को multiplication हुआ, then it will be shifted by alpha units. So make this correction. Okay, simple question. E raised to power minus j 2 pi t minus 2j t x of t has Fourier transform. What is your answer? Answer is in terms of omega. So what is your answer? Option B, x of omega plus 2. Again, as there is shift in the frequency domain, opposite sign. यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे +2, because shift is in the frequency domain. And e raised to power minus 4 pi jt. So you should find out what is f or what is the f naught shifting factor. So this 4 pi can be written as 2 pi into 2 jt minus sign is there. So the shifting factor is 2. Shifting factor is 2. Here we have minus sign. So in the answer we have plus sign. So correct answer is option B. So these are the two small corrections. I hope it is clear. If it is clear, reply in chat box with C. These corrections are clear. Okay. So one IAS exam question. If x of t has Fourier transform 2 upon omega sin pi omega. So x of t का Fourier transform दिया है. x of t का Fourier transform दिया है 2 by omega sin pi omega. Fourier transform of e raised to j 5t x of t. और आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा है. So definitely as time signal is multiplied by exponential, there will be shift. वो shift +5 होगा कि -5 होगा? It will be -5 because of opposite sign. So this will have Fourier transform x of omega minus 5. This is your x of omega. So wherever omega is there, replace with omega minus 5. जहाँ पे भी ओमेगा है उसको रिप्लेस करो ओमेगा -5 से. तो करेक्ट आंसर इज 2 अपॉन ओमेगा. ओमेगा को किससे लिखेंगे? ओमेगा -5. यहाँ पे पाई, ओमेगा को किससे लिखेंगे? ओमेगा -5. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. So you should understand that you have to apply the frequency shift property. Frequency shift property. Now recall the time shift property. Before we solve the question, just recall the time shift property. So x of t minus alpha has Fourier transform e raised to power minus j omega alpha x of omega. If x of t has Fourier transform x of omega, and now there is a shift. Now as there is a shift, so it will get multiplied by the exponential, and we have its Fourier transform. So this is the time shift property.
तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दिया नहीं रहता कि आपको टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करना है, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि हाँ इधर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाय इवन बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू शुड यूज टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। So we have a figure A. This is one figure A. यहाँ पे लिखा है figure A. We have one more figure, figure B. It is mentioned that figure A has a Fourier transform 2 sin omega t1 by omega. Figure A का Fourier transform given है 2 sin omega t1 by omega. And we have to find out what is Fourier transform of figure B. आपको ये दोनों सिग्नल देखने के बाद क्या लग रहा? After which operation we should have got this signal? After performing which operation we should have got this signal? Suppose ये x of t है, so after time shifting we will get this type of signal. After time shifting we will get this type of signal. अब shifting कितने से हो रही? ये origin है. Shifting कितने यूनिट से हुई? By how much unit shifting has been done? t1 यूनिट से. क्यों? क्योंकि ये माइनस t1 आ गया 0 पे, 0 आ गया t1 पे और ये t1 आ गया 2t1 पे. So the shifting is 2t1. Now whether it is x of t plus capital T1 or x of t minus capital T1, it is x of t minus capital T1. It is x of t minus capital T1. So if I write x of t minus capital T1, I will get this signal. Okay. So what is Fourier transform of x of t minus T1? By time shift property, x of t minus T1 has Fourier transform e raised to power minus j omega T1 x of omega. X of t has Fourier transform x of omega. Then x of t minus T1 has Fourier transform e raised to power minus j omega T1 x of omega. So x of omega given है, it will get multiplied by this exponential. So what is your answer? Option B. So this will get multiplied by this exponential. So this is not an easy question. So many things you should, आपको क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारी चीजें रिकॉल करते आना चाहिए. अगर हम फिर से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या था, एक फिगर ए है, एक फिगर बी है, फिगर ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है और पूछ रहे फिगर बी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा. तो आपको ये चीज पता चलना चाहिए कि फिगर बी इज द शिफ्टेड वर्जन ऑफ फिगर ए and by how much duration we have a shifting, and accordingly you should use frequency shift property. Once there is shift in one domain, there is exponential multiplication in another domain. So correct answer is option B. X of t equal to 1 upon a square plus t square has Fourier transform pi by a e raised to power minus a minus mod a minus a mod of omega. X of t equal to 1 upon a square plus t square has Fourier transform pi by a e raised to power minus a mod of omega. The signal x of t cos bt has Fourier transform. A, B, C, D. You take your time. So you should recall the modulation property. So according to modulation property,
x of t cos bt as Fourier transform pi times, sorry, 1 by 2 times x of omega minus b plus x of omega plus b. ठीक है, ये बाय मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी. So this is your x of omega. What will be x of omega minus b? ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस बी लिखो तो ये आ जाएगा पाई बाय ए ई रेज टू पावर माइनस ए, ओमेगा की जगह पे ओमेगा माइनस बी. व्हाट इज एक्स ऑफ ओमेगा प्लस बी? इन प्लेस ऑफ ओमेगा सब्स्टिट्यूट ओमेगा प्लस बी. So pi by a, instead of omega we have omega plus b, and it is multiplied by the factor 1 by 2. So these two factors also come. ठीक है. हाँ, cos जब भी आता तो दो x के बीच में प्लस साइन रहता. cos जब भी आता दो x के बीच में प्लस साइन आता, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा. देन cos अगर आएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रम और देयर इज अ शिफ्ट इन ओमेगा डोमेन. यहाँ पे cos ओमेगा बी नहीं हो सकता, शिफ्ट होगा. cos से मल्टीप्लाई मतलब शिफ्ट होता. टाइम सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय cos, वी हैव अ शिफ्ट इन द स्पेक्ट्रम. यहाँ पे तो कोई शिफ्ट ही नहीं है, cos से मल्टीप्लाई हुआ बट यहाँ पे कोई शिफ्ट ही नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सो दिस वाज इन द ईयर 2005 in GATE exam. Correct answer is A. Now one difficult question. For that you should recall I think 3 things. तो पहले मुझे बता दो आप x of tau d tau इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी x of t फोरियर ट्रांसफॉर्म x of ओमेगा अपॉन j ओमेगा प्लस पाई x of 0 डेल्टा ओमेगा. करेक्ट है क्या? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी. इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी. देन सेकंड, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of t dt, that means area under x of t is capital X of 0. And third is the definition of Fourier transform. अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगी. दैट इज नथिंग बट x of ओमेगा. सो दिस इज द Fourier ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन. For a function g of t, it is given that integration minus infinity to infinity g of t e raised to power minus j omega t dt equal to omega e raised to power minus 2 omega square. If y of t equal to integration minus infinity to infinity, sorry, integration minus infinity to t g of tau d tau, then they have not asked the Fourier transform, they have asked the value. What is area under y of t? I will write the options. You take your time, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, no issue. 0 minus j by 2 j by 2.
अप्लाई सम थिंकिंग। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बताया, एक बार देखना है ऊपर वाली चीज़ें तो वो भी देख सकते हैं। Don't do guessing, get the answer. Yes, 0 पुट करेंगे. Somewhere you need to put omega as 0. $60 more seconds. Those who got the answer, verify the answer. Okay. चलो कोई बात नहीं. थोड़ा देखो, ये चीज क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो दिस इज नथिंग बट जी ऑफ ओमेगा. यस और नो? ये चीज जी ऑफ ओमेगा है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म. So this is g of omega. So we got g of, indirectly they have given g of omega equal to omega e raised to power minus 2 omega square. अब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या रहती? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू, हाँ ये चीज क्या रहती जो चीज हमसे पूछे? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कैपिटल वाई ऑफ जीरो. इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में जीरो पे वैल्यू कैलकुलेट करेगी वैल्यू. एरिया अंडर वाई ऑफ टी इज द इज फोरियर ट्रांसफॉर्म एट ओमेगा इक्वल टू जीरो. एरिया अंडर वाई ऑफ टी इज फोरियर ट्रांसफॉर्म एट ओमेगा इक्वल टू जीरो. अब this is y of t. If I take its Fourier transform, so what will be y of, if I take the Fourier transform both the sides, so what will be y of omega equal to, use integration property, so integration minus infinity to t g of tau d tau as Fourier transform g of omega upon j omega, g of omega upon j omega plus pi times g of 0 into delta omega. What is g of 0? g of 0 कितना हो जाएगा? ओमेगा की जगह 0 पुट करो, 0 हो जाएगा. हाँ, तो ये चीज सिंपली क्या हो गई? g of omega upon j omega. So this is your y of omega. ठीक है. And what will be then y of 0? So okay, I will substitute the value of g of omega. G of omega is omega e raised to power minus 2 omega square
अपॉन जे ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो y ऑफ ओमेगा इक्वल टू e raised to power minus 2 omega square upon j. Then this is y of 0, this is y of 0, y of omega है हमारे पास, तो y of 0 will be e raised to 0 upon j, so that means 1 by j, and 1 by j is minus j. So correct answer is option B. Correct answer is option B. Very tricky question. It can be a 4-mark question. ठीक है, फिर से एक बार बोलता मैं, ये देखो ये चीज गिवन थी, ये चीज क्या है, जी ऑफ ओमेगा, और इसकी वैल्यू गिवन थी ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। फिर ये चीज गिवन थी, और ये चीज गिवन थी, दिस वन वाज गिवन, क्या था, हाँ ये चीज पूछे थे हमको, so this is nothing but y of 0. Area under any signal, recall the property. Are you able to recall? Area under x of t is Fourier transform at origin. Are you able to recall this thing? आप ये रिकॉल कर पा रहे? Type in the chat box y if you are able to recall. Area under y x of t is value of Fourier transform at origin. Whether you are able to recall this? Yes. किसी ने सर टाइम शिफ्ट होने के बाद जी ऑफ ओमेगा मिला ना, टाइम शिफ्ट कहाँ हुआ? टाइम शिफ्ट नहीं हुआ, ये तो डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ये चीज तो बेसिक डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। वी हैव नॉट गॉट बाय टाइम आफ्टर टाइम शिफ्ट के बाद नहीं मिला, दिस इज द डेफिनेशन। और आप थोड़ा ये लॉजिक लगा रहे, जी ऑफ टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लेंगे तब हमको शिफ्ट मिलता, पर यहाँ पे ये कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं बोल रहे, दैट दे आर सेइंग दैट दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज जी this thing, this integration value is this thing. They are not saying that after the Fourier transform we got this thing, this integration value is this thing, and this integration is nothing but the definition. Then this integration minus infinity to t g of tau d tau. So हमको बेसिकली जो चीज फाइंड आउट करना है y ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, उसके पहले हमको y ऑफ ओमेगा लगेगा, फिर y ऑफ ओमेगा में हम ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब ये y ऑफ टी और g ऑफ टाउ के बीच में ये रिलेशन है, तो दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रहता है बाय प्रॉपर्टी g ऑफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई g ऑफ 0 डेल्टा ओमेगा, g ऑफ ओमेगा, g ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है, तो दिस इज अवर y ऑफ ओमेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जे ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो ये हमारा y ऑफ ओमेगा है ई रेज टू पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन जे, और हमको y ऑफ 0 निकालना है, ओमेगा की जगह 0 पुट करो, ये आ जाएगा 1 बाई जे, और यही रहता माइनस जे, और यही चीज हमसे पूछे थे। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको सिंपल आ जाएगा। इफ यू मे गेट लाइक जी एक्स ऑफ ओमेगा, अभी चलो जल्दी से एक बताओ, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू, हाँ एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी डी टी। जल्दी से आंसर आना चाहिए, ऑप्शंस 0 4 1 2, 0 4 1 2, प्रॉपर्टी यूज करो,
So this thing is nothing but x of 0. Area under x of t is x of 0. Area under x of t is x of 0. तो x of omega given है, x of 0 क्या आ जाएगा 4/4 plus 0, that means 1. So area under x of t is 1. 1 is the answer.